Welcome to A Topper's Villa. आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल एनी ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जर्व्ड फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। और to research means just to find the new knowledge and practical solutions in the form of answers to questions formulated beforehand. जो questions हमारे सामने पहले से रखे जा चुके हैं, the questions which are put to us beforehand, so we have to find the new knowledge and practical solutions in the form of answers to that formulated questions. And also हम लोग research को एक systematic inquiry बोल सकते हैं. Research is a systematic inquiry that investigates hypotheses and suggests new interpretations of data, poses new questions for future research to be explored. Now let us see what are the objectives of the research. The main objectives of research are to discover new facts, to analyze a process or phenomenon to identify the cause and effect relationship, to develop new scientific tools, ideas, theories, to solve and understand scientific and non-scientific problems, to overcome or solve the issues occurring in our everyday life, and to search for the solutions to non-scientific, scientific, and social problems. Now let us see what are the different types of research. So there are various different types of research, such as fundamental research, applied research, analytical research, quantitative research, qualitative research, descriptive research, and exploratory research. तो इस क्रम में हम लोग याद रख सकते हैं FAAQQDE: फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. Now what is meant by fundamental research? So formulation of a theory and its generalization are the primary concerns of fundamental research. Fundamental research means theory का formulation and its generalization are the primary concerns. Okay, so it seeks to discover new facts with a wide range of applications, supplementing the ideas already known in the specific field or industry. So this is all about the fundamental research. Now what is applied research? So research can also be applied or fundamental, like an attempt to find a solution to an immediate problem encountered by a firm, an industry, a business organization or a society is known as applied research. So ये जो रिसर्च जो होता है उसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसी भी इमीडिएट प्रॉब्लम को जो कि कोई एक फर्म, कोई इंडस्ट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोसाइटी कैरी आउट करती है, उससे हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. So researchers engaged in such researches aim at drawing certain conclusions confronting a concrete social or business problem. यहाँ पे जो रिसर्चर्स इंगेज होते हैं वैसे रिसर्चर्स में, अप्लाइड रिसर्चर्स में, वो एम करते हैं ताकि सर्टेन कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर पाए कन्फ्रंटिंग अ कंक्रीट सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम, जो एक अच्छा सामाजिक और व्यावसायिक प्रॉब्लम को डील कर पाए. नाउ व्हाट इज एनालिटिकल रिसर्च?
एनालिटिकल रिसर्च मेक्स यूज ऑफ द प्रूवन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स पहले से प्रूव किए जा चुके हैं उनका यूज करके ये क्या करेगा एनालिटिकल रिसर्च, दैट इट विल बी फॉर्मिंग द बेसिस फॉर द रिसर्च. So analytical research makes use of the proven facts to form the basis of the research. Researchers frequently work to find supporting data that strengthens and authenticate their earlier findings. Also, it helps to develop new concepts related to the research subject. Thus, analytical research combines minute details to produce more tenable hypotheses. The analytical study thus explains why a claim is valid. So, this is about the analytical research, that here a proven fact is used that forms the basis for the research, and the researchers work to find the supporting data. That what are the supporting data? जो supporting data क्या है जो उनके earlier findings को स्ट्रेंथन कर रहे थे, ऑथेंटिकेट कर रहे थे, जो हेल्प करते हैं डेवलप करने में नए कॉन्सेप्ट्स जो रिलेटेड होते हैं उस रिसर्च सब्जेक्ट से. सो एनालिटिकल रिसर्च कंबाइंस द माइन्यूट डिटेल्स टू प्रोड्यूस मोर टेनेबल हाइपोथेसिस, जो पहले से हाइपोथेसिस दिए जा चुके हैं उनके लिए कुछ और भी फैक्ट और माइन्यूट डिटेल्स अरेंज किए जाते हैं इस एनालिटिकल रिसर्च में, ताकि उस हाइपोथेसिस को और भी टेनेबल और भी एक्सेप्टेबल बनाया जा सके और ये बोला जा सके तो वो एनालिटिकल स्टडी एक वैलिड क्लेम को प्रोड्यूस करता है. अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. व्हाट इज मीन्ड बाय क्वांटिटेटिव रिसर्च? क्वांटिटेटिव रिसर्च रिलेट्स टू एस्पेक्ट्स that can be quantified or can be expressed in terms of quantity. Quantity, the term itself signifies about the quantity. So it involves the measurement of quantity or amount. Simply जिस भी रिसर्च में हमें क्वांटिटी या अमाउंट का मेजरमेंट करना हो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहला जाएगा. So different available statistical and econometric techniques are adopted for analysis in such research. जो पहले से अवेलेबल स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च को कैरी आउट करने में. नाउ व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च refers to non-numerical elements in the research. Qualitative research comes to the rescue when the researcher cannot grasp the information or data in terms of the numbers. जब किसी भी रिसर्चर के पास नंबर्स या इंफॉर्मेशन जब किसी भी रिसर्चर के पास इंफॉर्मेशन और डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ग्रास्प नहीं किया जा सके तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का कॉन्सेप्ट यूज करके उस सिचुएशन से रेस्क्यू किया जा सकता है. दैट qualitative research is particularly significant in the context of behavioral sciences, which aim at discovering the underlying motives of human behavior. Qualitative research जो होता है वो quite significant है किस संदर्भ में? Behavioral sciences के संदर्भ में, जो कि एम करता है ह्यूमन बिहेवियर के छिपे मोटिव्स को डिस्कवर करने में. What is the descriptive research? Descriptive research consists of surveys and fact-finding inquiries of different types. So the main objective of descriptive research is to describe the state of affairs as it prevails at the time of study. जो स्टडी के टाइम पे स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेन मोटिव है. द फोकस ऑफ व्हाट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर देन व्हाई. So descriptive research just focuses more on the what problem rather than why. जो रिसर्च प्रॉब्लम में क्या जो सवाल आता है उस क्या पे ज्यादा फोकस होता है हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बजाय क्यों के. So since the researcher cannot influence the variables in this research design, they can only report the facts precisely as they occurred or are occurring. So the main methods adopted for carrying out this type of research are secondary data analyzed in a quantitative as opposed to a qualitative manner, surveys, observations, and other data analysis methods. Now, what is exploratory research? It is also termed as formulative research studies. So the main purpose of this is to formulate a problem for more precise investigation and development of the working hypothesis from an operational point of view. So the major emphasis is on the discovery of ideas and insights, information needed
is defined only loosely in this type of research. Research process is flexible and unstructured, and the sample is small and non-representative. So the analysis of primary data is qualitative. Generally, three methods are carried in the context of research design for such studies. First one is the survey of the concerning literature. Second is the experience survey. And third is the analysis of the insight stimulating examples. Now let us see the difference between the qualitative research and quantitative research. So the first point here is the qualitative research focuses on exploring ideas and formulating a theory or hypothesis. क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसका फोकस होता है आइडियाज को एक्सप्लोर करने में और थ्योरी या हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में. Whereas in the case of quantitative research, there is a focus on testing the hypothesis and theories. So formulating is the main point, and here the testing is the main point. Now in the case of qualitative research, the analysis is done by summarizing, categorizing and interpreting. हम लोग समरी बना सकते हैं, हम लोग कैटेगरीज दे सकते हैं और हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी गिवन फैक्ट या किसी गिवन डाटा को. क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो एनालिसिस होती है वो मैथ और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे की जाती है. नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. लेकिन इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च जहाँ क्वांटिटी की बात हो वहाँ डेटा जो होंगे वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में होंगे, so that mainly expressed in numbers, graphs and tables. वो सारे डेटा आपके नंबर्स में, ग्राफिकल फॉर्म में या टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे. Now in the case of qualitative research, there is a requirement of only few respondents. But in the case of quantitative research, there is a requirement of many respondents. उसके बाद जो की टर्म है क्वालिटेटिव रिसर्च में वो है अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी. लेकिन अगर बात करें हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो इसमें की टर्म्स आते हैं टेस्टिंग, मेजरमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रेप्लिकेबिलिटी. उसके बाद अगर हम लोग डिफरेंस देखें रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी के बारे में, रिसर्च मेथड्स और मेथोडोलॉजी के डिफरेंसेस होते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखें रिसर्च मेथड्स आर द वेरियस प्रोसीजर्स, स्कीम्स एंड एल्गोरिथम्स यूज्ड इन रिसर्च. रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं? ये वेरियस प्रोसीजर होते हैं, स्कीम्स होते हैं और एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं. ऑल द मेथड्स यूज्ड बाय रिसर्चर्स ड्यूरिंग द रिसर्च स्टडी आर टर्म्ड एज रिसर्च मेथड्स. जितने भी सारे मेथड्स एक रिसर्चर यूज करता है अपने रिसर्च स्टडी के दौरान वो सारे के सारे रिसर्च मेथड्स कहलाते हैं. तो ये तो था रिसर्च मेथड के बारे में पहला पॉइंट. लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है? इट इज जस्ट अ सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. इट इज नॉट just the method, it is a systematic way to solve a problem. And here in the case of research methods, it is essentially planned, scientific and value neutral. It includes theoretical procedures, experimental studies, numerical schemes, statistical approaches, etc. But in the case of research methodology हम लोग देख सकते हैं it is a science of studying how research is to be carried out. रिसर्च कैसे कैरी आउट किया जाना है इसका साइंस हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में मिलता है. So essentially the procedures by which researchers go about their work of describing, explaining and predicting the phenomena are called the research methodology. इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें रिसर्च मेथड जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें सैंपल्स के कलेक्शन में एंड डेटा में टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो रिसर्च मेथड से हमें सैंपल कलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन में मदद मिलती है. वहीं पर्टिकुलरली साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स call for explanations based on the correct facts, measurements and observations and not on reasoning alone. But in the case of research methodology, अगर हम लोग देखें तो it is defined as the study of methods by which the knowledge is gained. The method by which the knowledge is gained. Okay, now what are the techniques that are involved in defining a problem? So the techniques are state the problem in a general way, understand the nature of the problem, survey the available literature, go for the discussions of developing ideas, rephrase the research problem into a working proposition,
What is the research process? The research process consists of various methods. Here we will be discussing 9 methods of research process. First process is formulating the research problem. Second is extensive literature survey. Third is development of an approach to the problem. The fourth is preparing a research design. Fifth is the execution of the process. Sixth is the analysis of data. Seventh is hypothesis testing. Eighth is generalizations and interpretations. And ninth is the preparation of the report or presentation of the results. That is the formal write-up of conclusions reached.